Our colleague Ashutosh Mishra is reporting from southern Israel. Let's understand the ground situation there from Ashutosh. Just 10 minutes ago, loud explosions started again. Looks like Israel attack in the Gazapati area, because that's very close proximity where I am at the moment in Ashkelon, which is the closest nearest border to Gaza. Loud explosions can be really heard, and every time it just heard, your heartbeat goes really up, because that's something you usually don't see in other parts of the world. But here what has happened last night, several rockets, the barrage of rockets were fired in Ashkelon from the Gaza side. And here, right behind me, is all the destruction caused, havoc by the attacks by the Hamas. You can see these heavy vehicles have been badly penetrated by the rocket shells. Everything destroyed here. Last night there was a massive explosion in the parking area, and there you see this is all the footprints of the destructions, though the rescue force, in fact a massive piece of rocket literally fell here at this ground. You can spot this point of area. So this explains the potential and the power of the rocket. In fact, I'll just bring you a piece of it. That's a heavy metal one. If you can see, there's a very heavy metal, and it looks like a military grade rocket, because the way it has been made, it can't be just country made or something. And of course, traveling such far distance, and this explain the kind of terror the Hamas is unleashing constantly in the close proximity of this area. Also, if you see the massive damage to the public assets, public properties are being done by the Hamas, though the security personnel are also around. But every time the noise and explosions are heard, there is always a threat of air siren that probably the Hamas would fire, because even after several attacks and response from Israel, their potential to fire the rockets have not been reduced. We are constantly under threat. And, while I'm talking, any moment you could hear the air siren, and you will get only 10 seconds, 10 to 15 seconds. Okay, you can hear the loud noise. That's the fighter jets scrambling. And this always begins by Israel time. It is in India it's nearly 12 o'clock, and here it's just 9:39. So nearly 9:35 it all begins in the morning. Fighter jets are scrambling, attacks taking place, loud explosions heard. So you won't be surprised if all of a sudden I hear an air siren, and in 10 seconds only, the people are so trained, because they have been seeing over the years that you have to find a shelter, either a bunker or the staircases, or if you don't see anything, I'll have to just go against the wall on a vehicle to protect the head and other parts of the body. So this is the situation, and explains why people are terrified and why it is really a troubleful time. Look at this sheet. This is the piece of the rocket that fell down yesterday in this part of Ashkelon. This is very close to the Ceded border area. Right behind me there you see the coastal line, the Mediterranean Sea. So this is where, from my right direction, where the rockets are coming from, and this targeted several places last night. So even the threat continues. Since last night there were several alarm placed. There are several buildings I can see have been also came under the attack. So the situation remained grim and tensed here in this part of Israel, in the southern Israel, where I'm reporting from. फाइटर जेट ठीक मेरे ऊपर से गुजर रहे हैं और मैं उनकी आवाज़ सुन पा रहा हूं। लगभग 9:30 बजे से जो आज सुबह का पहला राउंड है एस्केलेशन का, वो शुरू हुआ है। लेकिन सईद, दरअसल स्थिति ऐसा भी नहीं है कि इजराइल को नुकसान नहीं हुआ है, और वो नुकसान किस कदर का है और हमास का हमला कैसा है, ये तस्वीरें देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इससे पहले मैं आपको वो रॉकेट दिखाऊं जो मेरे सामने इस समय रखा है अपने तमाम दर्शकों को। मैं आपको सबसे पहले उस घर में ले चलता हूँ जहां पर रॉकेट गिरा था। सुबह 6 बजे पूरा परिवार, और एक पुलिसकर्मी का घर है, पूरा परिवार यहाँ सो रहा था, और अचानक सुबह 6 बजे रॉकेट गिरता है। सब आवाज से दहले, डरे, और बस यहाँ से भागकर जान बचाई। दरअसल जो दंपत्ति था, ये पुलिस वाले का घर है, वो यहाँ थे, और रॉकेट जो है वो इस कमरे की बाहरी दीवार लगभग 1 फीट से ज्यादा ऊंची, मोटी, और इजराइल में घर बनाने की टेक्नोलॉजी ऐसी है, दरअसल सरकार का आदेश है कि उन घरों में जिस खास तकनीक से ही बनेंगे, जिसमें सीमेंट और कंक्रीट के साथ साथ लोहे का काम बहुत मजबूत होता है दीवारों में भी, कि वो इसीलिए बनाए जाते हैं कि आप इस हमला झेल सके। हमास ने बर्बरता ऐसी दिखाई। देखिए पुलिस वाले का घर, ये बच्चे का कमरा है, बच्चे यहाँ पर सो रहे थे, और उनको लेकर के ये जो महिला है ये अपने बच्चों को लेकर के भागी। ये वो दंपत्ति है, पुलिसकर्मी है, वो बस अब अपने घर का जरूरी सामान यहाँ से निकाल के बस जाने की कोशिश में है, कुछ बचा सके। इस घर के हिस्से में नुकसान हुआ, और रॉकेट गिरा, वो गिरा इस कमरे में। ये देखिए, ये जो आप छेद देख पा रहे हैं, ये जो बड़ा हिस्सा है, दरअसल रॉकेट यहाँ गिरा है।
अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी दीवार पर, लेकिन अब आपको वो दिखाता हूं जिसको देख करके यकीन नहीं होगा। ये देखिए, ये जो आप सामने टुकड़ा रखे हैं, ये है वो रॉकेट जो दरअसल आया हमास की ओर से। इसकी लंबाई देखिए, यही वो रॉकेट है, लगभग 1.5 फुट लंबा, जिसका अब ये खाली शेल है, लेकिन ये खाली शेल भी मैं उठा नहीं सकता। और ये रॉकेट जब घर में गिरा, इसने इस तरह की तबाही मचा। आप समझिए कि किस तरह की क्षमता हमास की है कि जो इतने बड़े बड़े रॉकेट वो इस्तेमाल कर रहा है और इससे नुकसान पहुंचा रहा है। और ये देखिए नुकसान भी कैसा है, उसकी क्षमता देखिए कि ये पूरी जो दीवार है 1.5 फीट चौड़ी, इस पूरी दीवार को उसने भेद दिया था, पूरे घर को। और ये देखिए ऊपर तक नुकसान, ऊपर 3 से 4 मंजिला तक नुकसान हुआ है लोगों का। ये पूरा जो इलाका है वो तहस नहस हो चुका है। मजबूत इमारतें भी इसकी चपेट में आने से नहीं बच पाई।